Hello students, welcome to our channel. Today we are continuing our chapter number 4, that is complex number. In this video we will discuss about the objective type questions level 2. In the previous videos we have discussed about the basics of this chapter. In this we will discuss the main important questions related to the complex number. So here we have a question number 1, that is to find out the modulus of under root 2 iota minus under root of minus 2 iota. So here these are the options. So let's understand it. Here we have under root of 2 iota minus under root of minus 2 iota, right? So as we know, under root of minus 1, value of under root minus 1, this is iota. So here it will be under root of 2 iota, then minus as it is, and then under root of 2 iota into iota, right? It will be iota square. Iota square value, this is equal to minus 1. So it comes under root 2 iota, then minus plus, then it is under root 2 here. Now, in this, we need to find out the modulus, right? So how to find out the modulus of any value? How to find it? We know if z equals to x plus iota 1, right? So modulus of z will be equal to under root of x square plus y square, right? So here this is x, another value this is y, right? So it will be x square plus y square under the root means under root of root 2 whole square plus under root 2 whole square, right? It will be under root 2, that is 2, under root 2, that is 2, 2 plus 2, 4, and root 4, it is equals to 2. Okay. So here the value or the answer you can say is equal to 2. Option number 1. Now here come to the next question. This is the solution also. It is given here. Okay. So you can find out the value here. This is 2. Now next question is, if alpha and beta are the different complex number, right? With modulus of beta, it is equals to 1. What is given? We have two values, right? Two complex number. One is alpha, another is beta, and here it is given modulus of beta, it is equal to 1. Then find out the value of this. आपको find out करनी है modulus of beta minus alpha by 1 minus conjugate of alpha into beta, right? So how to do it? Let's understand. As here we have modulus of beta which is equal to 1, right? Now we can take square here. Taking square we get modulus of beta square equals to 1 square, तो 1 ही होता है. Now we know if we multiply any conjugate number, any number, complex number with its conjugate, for example if I take x plus iota y, right, and then multiply y by x minus iota y, okay, so this will come equal to under root of, here this will be x square minus iota y whole square, right? It's x square iota square minus 1 minus plus y square. Are you getting? So now this is what it is here, x square plus y square. This is modulus of z. Modulus of z की वैल्यू कितनी होती है? अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. तो modulus of z स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. Implies this complete value is equal to modulus of z square. So this is here we have written modulus of beta square की वैल्यू, अगर हमने कहा इसके अपोजिट अगर हम ले रहे हैं तो z into conjugate of z. So same here if we are taking modulus of beta square, it will be beta into conjugate of beta. जो वैल्यू होगी वो उसका conjugate, वो क्या होता है? modulus of beta square होता है. So this comes equals to 1, right? ये वैल्यू 1 के इक्वल आ गई. अब क्वेश्चन में हमें गिवन है बीटा माइनस अल्फा, 1 माइनस कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा इंटू बीटा. सो व्हाट वी आर डूइंग हियर, 1 की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं बीटा इंटू बीटा बार, राइट? बीटा इंटू कॉन्जुगेट ऑफ बीटा माइनस conjugate of alpha into beta. So from here you can take denominator common. What is common here? Beta. So another is beta minus alpha by then conjugate of beta minus conjugate of alpha, right? And this value as it is given, so this value comes equals to 1.
Okay, so the value will be equal to 1, right? Now, next is here we have for any complex number x plus iota y, suppose a equal to, it is given modulus of x plus modulus of y, and b that is equals to root 2 x plus iota y. Then which one of the following is true? Value of a is given to us, value of b is given to us. We need to find out which one is true. So for this, let's take a. A is modulus of x plus modulus of y. Now find out the value of a square. So how to find out the value of a square? We take squaring both sides. So this is a square, and here we can apply the formula a plus b whole square. So it is a square plus b square plus 2 into a into b, right? Now understand this, this value will be less than, ये value less होगी, किससे less होगी? Twice of x square plus y square से, right? ये value less होगी किससे? Twice of x square plus y square से. It means x square plus y square यहाँ से less होगा b से. You can find out here under root 2 into x plus iota y. ये किसकी वैल्यू है? b की. तो b स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? b स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? इट्स 2 इंटू, फाइंड आउट द कॉन्जुगेट, सॉरी मॉडुलस, इट्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट? ठीक है, यहाँ से मॉडुलस जो होता है वो क्या होता है? अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और यहाँ पर आपने क्या किया? इसका स्क्वायर ले लिया, राइट? वी आर टेकिंग b स्क्वायर, दैट्स वाई. तो यहाँ पर आ गया 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो ये वैल्यू क्या होगी? b स्क्वायर, और b स्क्वायर लेस होगा किससे? b से, राइट? सॉरी, दिस लेस होगा किससे? b स्क्वायर से. So now a square is less than b square, so a is less than b, and a and b are positive value, right students? So here this is the first answer, first option, that is a less than equal to b. Now next question is the solution of equation modulus of z minus z equal to 1 plus 2 iota, right? In this options are given. Let's understand. Z we know equal to x plus iota y. Here value of z it equals to, here in this equation we will keep the values. This is modulus of z. तो अगर z x plus iota y है तो modulus of z कितना होगा? अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस value of z that is equals to x plus iota y, and this value equal to 1 plus 2 iota, right? Keep the value here. Now equating real and imaginary part, here y comes equals to minus 2. So students, let's understand this one. From here, under root of x square plus y square minus x then plus iota y, it is equals to 1 plus 2 iota, right? Now this is complete real part, right? This complete is a real part, and this one here another real part of this equation. Then here in this complex number, this one is imaginary part, and from here we have this imaginary part, right? So if it is minus, here it is minus sign, so this will also come negative, okay? तो ये negative आ जाएगा. तो compare करो, this part should be equal to 1. This here it is written under root of x square plus y square, under root of x square plus y square minus x किसके इक्वल आ गया? 1 के इक्वल, और अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? 1 प्लस एक्स के इक्वल. दिस इज रिटन हियर. नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कम्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर. दिस कम्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, राइट? In this x square with x square cancel, y square equals to 1 plus 2x, right? Okay, so here we have this value, this condition, and from here if you compare the imaginary part, so here it is imaginary part, right? Imaginary part of this, and this is imaginary part of another. So minus y comes equal to 2. From here y comes equals to minus 2. Put the value here. Minus 2 whole square equals to 1 plus 2x, right? Now 4 comes equals to 1 plus 2x. Now 3 comes equals to 2 plus x, 2x.
Now x comes equals to 3 by 2. The value of x comes equals to 3 by 2. Okay. Now x value we know 3 by 2 and y value is minus 2 iota. Okay. Now next question is, if modulus of z1 equal to modulus of z2 and amplitude of z1 plus amplitude of z2 equal to 0. Okay. Then these are the options. So how to find them? First of all, if we are saying modulus are equal and amplitude of z1 plus amplitude of z2 is equal to 0. Now in this we say z1 conjugate equal to z2. For this we say, from this z1 and z2 are conjugate complex. If we are saying amplitude of z1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ z2 अगर इक्वल हो जाए, है ना, इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है, तो हम कहते हैं कि वो क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे. ओके. नाउ फ्रॉम दिस वी से अगर z2 होगा तो z1 का कॉन्जुगेट होगा. इसको कैसे समझते हैं देखो जरा. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम सेइंग z दैट इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, राइट. ओके. नाउ इफ वी आर फाइंडिंग दिस कॉन्जुगेट, देन दिस विल बी x माइनस आयोटा y. Okay. Now if we add it, right, so what we get, z this plus z bar equals to x plus iota y plus x minus iota y, right. This cancel out and we get equals to 2x. Okay. Now if this is the result, if amplitude of z1 plus amplitude of z2 it equals to 0, तो इसका मतलब ये इसका कॉन्जुगेट बनेगा और ये इसका कॉन्जुगेट बनेगा. तो इसका मतलब z1 का कॉन्जुगेट लेने पर z2 आएगा और z2 का कॉन्जुगेट लेने पर क्या आएगा, z1 आएगा, राइट. सो विच ऑप्शन इज राइट हियर? ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, राइट. नाउ नेक्स्ट इज, इफ मॉडुलस ऑफ z minus 2 डिवाइड बाय this, sorry, it is written like this, modulus of z2 minus z minus 2 by z minus 3 equals to 2. It represent a circle, then its radius is equal to, अगर ये आपको एक सर्कल दे रहा है तो आपको रेडियस बताना है. So these are the 4 options. Now understand it, students. Here we have a property that modulus of z1 by z2 it is equal to modulus of z1 divided by modulus of z2. How it comes? कैसे आया ये? हमने एक रिजल्ट पढ़ा था previous videos में, that to multiply this by z2 and this by z2, right. Now the upside we can separate z1 z2, separate modulus will be there, and this comes equals to z2 square modulus, right. Now we have another property, z to the power n अगर आ जाए तो आप इसको लिख सकते हैं modulus of z to the power n, right. ये जो पावर होती है वो बाहर आ जाती है. तो here we can write modulus of z1 into modulus of z2 divided by modulus of z2 power 2. तो 1 cancel out and this will be modulus of z1 by modulus of z2. Now this is we have, right, ये हमें given है, तो क्यों ना इस प्रॉपर्टी को यूज किया जाए, मॉडुलस को सेपरेट कर लिया जाए. तो here I am writing z minus 2 modulus divided by z minus 3 modulus, that is equal to 2. Now take this that side. Modulus of z minus 2 it is equal to twice of modulus of z minus 3. What is the value of z? We know z is equal to x plus iota y. So this comes equals to x plus iota y minus 2. It equals to 2 into x plus iota y minus 3, right. Now find out the modulus. What is the formula of modulus? It is under root of x square plus y square, real part square plus imaginary part square under the root. Now here this x and here minus 2. So this real part is x minus 2 and imaginary part is y. Here we have x minus 3 plus iota into y. So this square plus this square. Now 2 का square 4, x minus 3 whole square plus y square. So why this square come? क्योंकि ये पूरा का पूरा तो अंडर रूट में आएगा. अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ हियर दिस 2 x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. अब आपको रूट हटाना है तो स्क्वायर किया और रिजल्ट हमारे पास ये आ गया.
Now let's solve. A plus b whole square. This I am solving here. X square 2 square 4 minus 2x plus y square, it equals to 4 into x square plus 9, then minus 6x plus y square, right? From here we have x square plus 4 minus 2x plus y square equals to, this comes 4x square, 9 4 is 36 minus 24x plus 4y square. Now take x square one side. So this is 3x square plus y square plus 4y square. This comes equal to 3y square. Now minus 24x and plus 2x, right? Then we have plus 4 minus 36 equal to 0. Okay, so let's solve this. Okay, plus y square, this side minus y square, minus 2x plus 2x, and here, right. Now solve 3x square plus 3y square. Okay, now this is minus 24x plus 2x. I think there is a mistake here. Right. This come here 4x ना, 2 का कितना आएगा, 4 आएगा, right, 4. So here it will be minus 20x, right? Then this comes equals to minus 32 plus 36 और minus 4 आ जाएगा. ये minus का 4, ये plus 36, क्योंकि दूसरी साइड है आपका right hand side. So this comes equal to plus 32 equal to 0. Dividing all the term by, किससे divide कर देते हैं, 3 से. Y square by 3, right? This is 3 already here in the question. 20, this 32 by 3 equal to 0, right? So this 3 cancel out. Now this is equation of a circle. X square plus y square plus 2gx plus 2fx plus c equal to 0, right? So from this we can find out the radius. As you compare this, 2g, that will be minus 20 by 3, and 2f, that is equals to 32 by 3. So g comes equals to minus 10 by 3 and f comes equals to 16 by 3. Now g square plus h square, we have here minus 10 by 3 whole square, minus 10 by 3 whole square, and then we have 16 by 3 whole square, right? Okay, now you solve it, 100 plus this and divide by n. So you will get the answer 2 by 3. Okay, now next question is, if z with a purely imaginary number such that imaginary part of z is less than 0, right? Then argument of z is equals to, these are the answers. So how to find it? If imaginary part of z is less than 0, it is less than 0, then argument of z is equals to minus pi by 2, right? Okay, or you can say if z we are saying less than 0, less than 0 का मतलब क्या होता है, देखो नेगेटिव है ना, तो यहाँ पर माइनस आइटा हो जाएगा. कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, वो नेगेटिव वाले क्वाड्रेंट में आ जाएगा, इन दोनों में. तो यहाँ पर आएगा माइनस आइटा. अब माइनस आइटा को हम क्या लिख सकते हैं, सिस ऑफ माइनस पाई बाय 2. यू नो इट, हम सिस किसको बोलते हैं, सिस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, राइट? तो आप बताओ कोस ऑफ पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है, ये होगा हमारा कोस पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 0 प्लस हियर इट इज आयोटा साइन पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पर माइनस आएगा ना, नेगेटिव में है हमारे पास माइनस पाई बाय 2. सो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस ऑफ साइन ऑफ पाई बाय 2, राइट? और साइन पाई बाय 2 कितना होता है, 1. तो आंसर कितना आ गया, माइनस का आयोटा. माइनस आयोटा को हमने क्या लिखा, सिस ऑफ माइनस पाई बाय 2. सो फ्रॉम हियर वी से ये वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं, वी कॉल्ड इट आर्गुमेंट. Okay, so argument of z is equal to minus pi by 2. Answer is minus pi by 2. Now, next question. Cos of iota into log of a plus iota b divided by a minus iota b. How to solve it? We have this a
equal to cos theta. Let's consider B equal to sin theta. Okay. Now Z equals to log of A plus iota B by A minus iota B. Now students, understand it. If we have A plus iota B, I can write it as e to the power iota theta, right? Here, A minus iota B, we can write it as e to the power minus iota theta, okay? So, if we have iota theta divided by e minus iota theta, that comes equals to e iota theta plus iota theta. It equals to e to the power 2 iota theta, right? We are saying log of e 2 iota theta. So log e is equal to 1. So answer is 2 iota theta. Now theta we have. So let's solve this. Cos of iota z. Okay. Cos of iota z. Z, why we are taking? Because this complete we have taken z. So cos of iota and this is z. So the value of z we found it equal to 2 iota theta. This is here 2 iota theta. Cos of iota into 2 iota theta. Here cos as it is. Now 2 iota square ki value minus 1 and then theta. We got here cos of minus 2 theta, which is equals to cos 2 theta. And this is 1 minus tan square by 1 plus tan square according to the formula. Now from here we have this equation first and this is equation second. So sin theta value is equal to B, cos theta value is equal to A. Divide it. Tan theta comes equals to B by A. Then theta comes equals to tan inverse of kitna? B by A. Right? Okay. Right? Tan theta we have here B by A. So here we put the value B square by A square, B square by A square. Now take LCM. A square minus B square divided by A square and this A square plus B square by A square. So from here we get the option. Which one? Option number first. Right? Now next is the real and imaginary part of e to the power x plus iota y are. These are the four options. Now, in this we have e x plus iota y. Separate them. E to the power x into e to the power iota y. Okay, powers को separate कर सकते हैं. E to the power iota y, it is cos y plus iota sin y. Now, real and imaginary part of this are. क्या बनेगा? E to the power x into cos y and e to the power x into sin y, right? These are the real and imaginary part. Next question, let z equals to 1 minus t plus iota under root of t square plus t plus 2, where t is a real parameter. The locus of z in the Argand plane is. So how to solve it? Let's first take the value z, which is equal to x plus iota y, equal to 1 minus t plus iota under root of t square plus t plus 2, right? Now, in this, we first compare. What we are comparing? Real part. X is equal to 1 minus t. So, here t, value of t comes equals to, t इधर जाएगा, x इधर आएगा. T comes equals to 1 minus x. Y is equal to, this is the imaginary part, under root of t square plus t plus 2, right? Now, in this, we have y taking square, y square comes equals to, this is under root of t square plus this, and value of t we are putting. Value of t, that is 1 minus x. जो अभी हमने find out की थी, उसकी value को हमने substitute किया. Plus 1 minus x plus 2. Now, this is here, we derive the values first. Y square, it equals to a square plus b square minus 2ab plus 1 minus x plus 2, right? Now from here, y square, it equals to 2 plus x square minus का 3x, right? 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया. x square यहाँ आ गया, minus का 3x आ गया और ये आपका आ गया 2. So y square, then it equals to x square minus 3x plus 4. Take this y square also that side. So it will be x square minus y square minus 3x plus 4 equal to 0. So this will be our answer. Next, it is a hyperbola. Right? This is the equation of hyperbola. Next question is, we have summation of k equal to 0 to 200
I to the power k plus summation of p equal to 1 to 50 I to the power p equal to x plus iota y, then xy equals to, these are the four options. So how to find it? We are taking, we know it, right? We know that if we have continuous power with iota, then the sum of that is equal to 0. Okay, if we have iota plus iota square plus iota cube plus iota 4, this is equal to 0. How? This comes iota, this is minus 1, this is minus iota and this is plus 1. तो iota से iota cancel out हो गया, minus 1 से 1, तो आंसर कितना आएगा 0. तो कंटिन्यूस अगर पावर होती है एंड नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा तो हम कहते हैं जो टोटल सम होता है वो 0 होता है. सो फ्रॉम हियर इफ वी हैव दिस 200, राइट, तो यहाँ पर 50 टर्म का तो सम कितना हो जाएगा 0, एक रह जाएगी आइटा टू पावर 0 जो 1 होती है. सेम हियर अप टू दिस वी हैव 12 टर्म्स, 12 टर्म्स तक का सम कितना होगा 0 और आइटा एज इट इज आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1. आर यू गेटिंग? नाउ इन दिस व्हेन यू सॉल्व इट विल कम 1 प्लस आयोटा -1. तो 1 से 1 कैंसिल होगा, कितना आंसर आएगा आयोटा, राइट. Now from this we can compare the values. It will come equals to 0 plus iota, it is equal to x plus iota y. X is equal to 0 आ गया, रियल पार्ट कंपेयर किया और इमेजरी पार्ट कितना आ गया 1. दिस द आंसर. नाउ if a and b are real numbers between 0 and 1 such that the point z1 it is given a plus iota, z2 it equal to 1 plus b iota and z3 equal to 0 from an equilateral triangle, then a and b are, आपको बताना है a और b की वैल्यू. So for this we are having four options. According to it they are forming a equilateral, right? So equilateral we know the result, z1 modulus square equal to z2 modulus square, or you can say modulus of z1 equal to modulus of z2. अगर लेंथ इक्वल है तो ये इक्वल होगा, राइट. अगर ये इक्वल है तो इनका स्क्वायर इक्वल होगा. इसका मतलब दिस इज इक्वल टू z1 माइनस z2 होल स्क्वायर. दैट इज इफ z1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, दिस इज a प्लस आइटा, राइट, एंड दिस इज b प्लस आइटा. तो यहां से आप वैल्यू फाइंड आउट करो. इट विल बी a स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस 1. 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट. वी से a माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस फ्रॉम हियर, right, a minus 1 whole square plus 1 minus b whole square. Now this is the correct option. We need to first solve it, right. From the first we say a square equal to b square और जो हमने लिया था a minus 1 वाला उसको भी solve किया. From here a square equal to b square and from this equation we say b square plus 1 minus 2a minus 2b, this is equal to a square. So a square, from this we compare, plus 1 equals to this complete, it is equals to a minus 1 whole square and this here 1 minus plus minus a whole square. This solve it, we get a square minus 4a plus 1 equal to 0. We get a equal to 2 minus root 3 by quadratic formula, right. Now next question is z that is equals to 5 plus t plus iota under root of 25 minus t square, then find the locus of z. These are the points like locus given here. Straight line हो सकता है, circle हो सकता है, ellipse हो सकता है, hyperbola. So as we have z x plus iota y and this value it is given. So from here we say x value किसके इक्वल होगी 5 plus t, y value किसके इक्वल होगी under root of 25 minus t square. y की वैल्यू रूट में है तो स्क्वायर कर देते हैं. नाउ फ्रॉम हियर इफ x इज दिस पुट द वैल्यू, राइट, और t की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं यहां से, ठीक है. t की वैल्यू कितनी आएगी, दिस इज x minus 5. तो हियर इट इज रिटन x minus 5 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद द सेंटर 5, 0 and the radius will be 5. Now another question, we have z that is equals to iota log of 2 plus root 3, then find cos of z. So students, as we know polar form, right, first of all what we do here, we multiply this with the iota. Okay, so iota z मैंने अभी बताया था आपको, जो भी वैल्यू होती है उसको लेके चलते हैं, ठीक है. तो आइटा z की वैल्यू क्या होगी, माइनस ऑफ आइटा इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर, log ऑफ दिस इज e टू द पावर आइटा z,
इट इज 2 प्लस रूट थ्री, राइट। ये z की वैल्यू कितनी है 2 प्लस रूट थ्री, पावर कितनी हो जाएगी -1। नाउ अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास है 1 बाय 2 प्लस रूट थ्री, तो रेशनलाइज करेंगे 2 माइनस रूट थ्री डिवाइड बाय 2 माइनस रूट थ्री, दिस इज 2 माइनस रूट थ्री डिवाइड बाय 4 माइनस थ्री which is equals to 1. So this comes equals to 2 minus root 3. इसका मतलब e to the power minus iota z की वैल्यू क्या बनेगी, it is 2 plus root 3, right? Now cos of z is equal to cos of iota z, और ये वैल्यू किसके इक्वल होती है e to the power iota z plus e to the power minus iota z by 2. तो from here we have half of e to the power iota z की वैल्यू है 2 minus root 3, e to the power minus iota z की वैल्यू है 2 plus रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल, 4 by 2 आंसर कितना हो गया 2. नाउ नेक्स्ट इज इफ iota z cube plus z square minus z plus iota equal to 0, then find the value of modulus of z. So how to find it? Here by verification we have z equal to 1 iota. So from this we have z cube means iota cube into iota 4, here iota square, here iota and this is iota. So from here iota 4 की वैल्यू कितनी होती है 1, iota square this is -1 minus iota and plus iota, this cancel out, this comes equals to 0, right? So this is first one. Now question is if modulus of z plus 6 by z that equal to 5, then the greatest value of modulus of z is equal to, आपको find out करना है modulus of z. These are 4 options here. From here we have first understand modulus of z. So in this we need 6 plus z. So what I am doing here, adding and subtracting 6 by z. इसमें हम क्या करेंगे, add कर देते हैं और subtract कर देते हैं. क्या ऐड करेंगे 6 बाई जेड ऐड किया, 6 बाई जेड सब्ट्रैक्ट किया, एंड वी नो आपके पास है अगर x प्लस वाई, सो दिस इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x देन मॉडुलस ऑफ y, सो दिस विल बी लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z प्लस 6 बाय दिस प्लस मॉडुलस ऑफ माइनस 6 बाय z, राइट? नाउ हियर वी हैव मॉडुलस ऑफ z लेस देन इक्वल टू, दिस इज वैल्यू इज 5, ये गिवन है हमारे को 5 plus 6 as it is, or here we are taking modulus of z. Now if we have this complete, ये हमें given है, ये हमने find out किया, तो modulus of z less than equal to 5 plus 6 by modulus of z taking LCM, modulus of z square less than equal to 5 modulus of z plus 6, take this that side, modulus of z square minus 5 modulus of z minus 6 is less than equal to 0. So this will be a answer, right? Now we can factorize it. ये बनेगा आपका, consider this a, तो a square minus 5a minus 6 is less than equal to 0. मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए, ऐड करने पर 5, तो दिस इज माइनस a plus 1 into a minus 6, right? a square minus 6a plus a minus 6 equal to 0. कॉमन ले लेते हैं इन दोनों से a minus 6 प्लस 1 कॉमन लिया, a माइनस 6 इक्वल टू 0, पूरे में से कॉमन आया a माइनस 6 और क्या बच गया a प्लस 1 इक्वल टू 0. सो दिस टू वैल्यूज विल बी द आंसर. a की वैल्यू रिप्लेस करी, दैट इज मॉडुलस ऑफ z. सो हियर वी हैव टू वैल्यूज लेस देन दिस, इंप्लाइज इट विल लाई बिटवीन -1 to 6. दोनों वैल्यू अगर लेस होता है तो वैल्यू लाई करती है, और अगर ग्रेटर का साइन होता तो वैल्यू इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर आती, राइट? नाउ here the area of triangle whose vertices are given z, iota z, z plus iota z, it is 24. area given है 24. आपको find out करना है modulus of z. So for this we have half of modulus of z square that is equals to 24, right? तो modulus of z की वैल्यू कितनी आएगी? This will 24 into 2 and this will comes equal to 4 root 3, right? Now next is for all complex numbers z1 z2 satisfying these given, then find out the minimum of modulus of z1 minus z2. So this is in BITSTAT 2006 में आया क्वेश्चन, understand?
मॉडुलस ऑफ Z1 वैल्यू है 12, मॉडुलस का होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इट इक्वल टू 12 स्क्वायर, राइट, अंडर रूट में आता है ना तो इसलिए स्क्वायर कर दिया. नाउ वी हैव Z2 माइनस 3 माइनस 4 आइटा इक्वल टू 5. फ्रॉम हियर वी टेक फर्स्ट मॉडुलस विच इज दिस कंप्लीट इज x, ये पूरा x है, ये पूरा क्या है हमारा y. तो दिस इज x2 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 4 होल स्क्वायर, राइट. Z1 को Z2 को आप खोलो x प्लस आइटा y, क्योंकि 2 पर है तो इसको 2 रख देते हैं. तो x2 के साथ 3 बनेगा, y2 के साथ हमारा 4 बनेगा. तो here we are having this a square plus b square, right, equal to 5 square. The two circle whose center are, first का क्या है 0 0, another 3 and 4. रेडियस क्या है यहाँ पर 12, इसका रेडियस कितना है 5, राइट. द सेंटर ऑफ C1, नाउ C1 C2 की वैल्यू आप निकाल सकते हो अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, राइट, इक्वल टू 5. Okay, so R1 minus R2 equal to 12 minus 5 which is 7. C1 C2 will be less than modulus of R1 minus R2. This is a circle with the center 0 0, another circle with the radius here given 3 comma 4. Then here this is another point, so this distance we need to find out. The value will be C1B minus C1A. This is R1 minus twice of R2, it equal to 10. 12 minus 10 equal to 2. Another question, question number 19 here. The vector z, it equals to minus 4 plus 5 iota turned counterclockwise through an angle of 180 degree and stretched 1.5 times. The complex number corresponding is newly obtained vector is. So these are the 4 options. In this, what we will do, we know that when we multiply complex number by iota, it rotate the vector by z by an angle of पाई बाय 2. आपको पता होना चाहिए अगर आयोटा से होता है तो पाई बाय 2 एंटी क्लॉकवाइज में जाता है, और अगर आयोटा स्क्वायर से होता है तो क्या हो जाता है, ये पाई से क्या बन जाता है, एंटी क्लॉकवाइज, राइट. सो हियर z डैश इक्वल टू आयोटा स्क्वायर इनटू माइनस 4 प्लस 5 आयोटा. आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करो, नेगेटिव ऑफ माइनस 4 प्लस 5 आयोटा, स्ट्रेचिंग 3 बाय 2 टाइम्स. 3 by 2 z dash, 3 by 2 of 4 minus 5z. So this will be equal to 6 minus 15 by 2 iota. Multiply करना है आपको, ठीक है. Now question is question number 20. Z is equal to under root of 1 minus iota divided by 1 plus iota. Then to find out the argument of z. आपको क्या करना है, argument of z को find out करना है. So how to find it? We have here 4 options. Z that is equals to 1 minus iota by 1 plus iota. So student, we can find out the values here. We rationalize it, right? तो rationalize कर देते हैं. 1 minus iota by 1 plus iota multiply by 1 minus iota by 1 minus iota. It will be under root of 1 minus iota whole square divided by, this is a plus b, this is a minus b. It will be a square minus b square, means 1 whole square minus iota square. 1 minus iota square की वैल्यू कितनी होती है, minus 1 plus 1, it is equal to 2. So this is equals to 2, right. Take square and then it will cancel out. 1 minus iota by this comes equal to root 2. So it will be 1 by root 2 minus iota by root 2. Now in this we have argument of z. देखो कौन सी वैल्यू है हमारे पास, it is lying between which one, x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, x पॉजिटिव y नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा पाई माइनस अल्फा, राइट. सो दिस इज ओके विथ x पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव. सो हेयर आर्गुमेंट ऑफ z विल कम इक्वल टू पाई माइनस अल्फा. अल्फा की वैल्यू पाई बाय 4 पुट करो तो आंसर कितना आएगा हमारा 3 पाई बाय 4. ओके, क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज A and B are 2 points, the argand plane such that the segment AB is bisected at point 0 0. If the point A, which is in the third quadrant, has a principal amplitude theta, then the principal amplitude of the point B is. So from here we have these 4 options. How to find? Since A is in the third quadrant, right? It's mentioned here. It is in the third quadrant, right? So how to solve? Principal amplitude will be, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस पाई प्लस अल्फा, माइनस पाई प्लस अल्फा, राइट. अल्फा माइनस पाई भी बोल सकते हैं आप. नाउ
In this, for beta, for b, alpha will be क्या हो जाएगा, पाई को इधर लेके जाओ, थीटा प्लस पाई. सो हियर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट. ठीक है, आपके पास जो भी पॉइंट होगा उसका यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस पाई. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z लेस देन 0 है, तो फाइंड करना है आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z, राइट. कितना होगा, so these are the 4 options. How to find? Here we are taking this argument of minus z minus argument of z. As we know, it comes in e to the power, so we can divide them, right? आप उसको डिवाइड कर सकते हो, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड बाई जेड लिख देते हैं. जेड कैंसिल, आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 पे कितना आता है आंसर, पाई. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 23 हियर, द सम ऑफ amplitude of z and another complex number is pi. Sum of amplitude of z and another complex number कितना है, pi, and their modulus are equal. So it can be written as, कैसे लिख सकते हैं, here z is x plus iota y. So by verification, if we are saying argument of z plus argument of minus of z conjugate, it will be argument of, अगर प्लस का साइन है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो माइनस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ जेड स्क्वायर. वाई? सो जेड इंटू जेड बार किसके इक्वल बन जाएगा, इट इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ जेड स्क्वायर, राइट. एंड हियर इट इज इक्वल टू पाई, पाई के इक्वल होगा. नाउ मॉड्यूलस ऑफ जेड इक्वल्स टू माइनस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ जेड, राइट. दिस विल बी आंसर. नाउ next question is, the point represented by the complex number 2 minus iota is rotated about origin. एक पॉइंट है, उसको रोटेट किया गया कितने एंगल से, पाई बाय 2. किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज. द न्यू पोजीशन ऑफ द पॉइंट इज, दीज आर द ऑप्शंस गिवन टू अस. सो एज वी हैव डिस्कस्ड इट, if z it is rotated in the clockwise, so the another value will be, जो दूसरी आपको जब उसको रोटेट करोगे तो कितना हो जाएगा, आयोटा जेड. आयोटा जेड दैट विल बी आयोटा, जेड वैल्यू पुट करते हैं 2 माइनस आयोटा, दिस विल बी हियर, ये क्या आ जाएगा आपका 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर. इट विल बी 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, इट इज 2 आयोटा प्लस 1. Okay, now next question is, here if z is equals to x plus iota y lies in the third quadrant, right, then conjugate of z by z also lies in the third quadrant. आपको बताना है कि अगर वो वैल्यू लाई कर रही है तो conjugate of z by z भी क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा. कब करेगा, लेट्स फाइंड इट. z is lying in this third, तो x की वैल्यू भी लेस देन 0 और y की वैल्यू भी लेस देन 0, राइट. Now, if we are saying modulus of z by z, so it is x minus iota y by x plus iota y, right? Now, you can rationalize it. Rationalize करो इसको, कैसे करेंगे, x minus iota y divide by x plus iota y multiply, it's x minus iota y divide by x minus iota y. So, this comes equals to x minus iota y का whole square by x square minus iota y का whole square. This comes x square plus iota y whole square minus 2 into x into iota into y divide by x square plus iota square into y square. This -1. iota square की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो डिनोमिनेटर बनेगा x square plus y square and numerator will be x square minus y square minus 2xy. This. Now x square minus y square, it is less than 0. Why it is so? Because the both value is less than 0. And xy is greater than 0. बोथ वैल्यू नेगेटिव है तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन 0 होगा. Implies y will be less than x and x will be less than 0. Now this is the right answer. Now this is a statement. If a and b are a positive real number, then listen and understand it carefully. Under root of minus a into under root of minus b is equal to under root of ab. Is it right? So now, how to find it? Let's understand. If we have this under root of minus a into under root of minus b, that will be minus of under root of a into b. Argument of this value, we can separate it, right?
So this will be pi by 3 minus of minus pi by 3. This is equal to 2 pi by 3. Okay. Now statement, the value of iota to the power iota, it is equals to e power minus pi by 2. So we can take logarithm here, right? If we take log, it will be iota into log iota. This will be minus pi by 2. अभी मैंने बताया भी था आपको, फर्स्ट क्वेश्चन हमने यही किया था. तो z की वैल्यू आपकी बनेगी e to the power minus pi by 2, right? Now here we have iota z minus of log of 2 plus root 3 है, z है उसको iota से मल्टीप्लाई किया, तो this comes equals to e to the power iota z, right? This is equal to 2 minus root 3 और e to the power minus z. अभी हमने क्वेश्चन किया था ये बिल्कुल सेम, ठीक है, तो आप कर सकते हैं इसको. तो दिस इज द फर्स्ट वन. Now the statement is the number of solution of equation is 2. The number of solution of this is 3. So write the above, which one of the above is true. कौन सी statement true है यहाँ पर? So from here the root of this are infinite many. इसके रूट कितने हो सकते हैं? बहुत सारे. और यहाँ पर इसके रूट कितने होंगे? 3 roots. So which one is? Second statement is true. Here we have a1 plus iota b1, a2 plus iota b2 up to an plus iota bn, it equals to a plus iota b. Then to find out tan inverse of bk by ak, it is equal to n pi plus tan inverse of this. This is the first statement. This another one. If 3 complex number are in AP, they lie in a circle. Let's find it. Which one is true here? Here, if 3 numbers are in AP, they lie in a straight plane. Means यहाँ पर straight plane आना चाहिए था. Here it is given circle. AP में अगर होंगे तो क्या होगा? Straight plane में. So here this is the solution. So like this we have completed this. You can do yourself. It's very simple, right? So we have completed our this objective type level 2 questions. Hope you like the video. If you like it, please press the like button and subscribe our channel so that you will get the update of our upcoming video. Thank you. Bye bye.